Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. This is chapter 4 of class 8 that is on agriculture. Very important topic. बहुत सारे questions यहाँ से मिले जो यूपीएससी ने पूछे हैं. कभी टाइप्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम भी इसी बुक में मिले मेरे को एनसीईआरटी में, और काफ़ी सारी चीज़ें लाइक क्रॉप की, कौन से क्रॉप को क्या कंडीशंस चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर. So Gurpreet, Madhav and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling the land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to it more fertile. That the wheat would fetch a good price in mandi, from where it would be taken to factories to make bread, biscuits from the flour. सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. One is primary, secondary and the tertiary. Primary means production of agriculture. So primary activities, rather economics में हम 3 प्रकार की activities में बात करते हैं. Primary जिसमें production करते हैं, right, from natural resources like coal, agriculture, gathering of are examples of primary activities. Secondary activities is manufacturing, that is processing of the resources. Steel, baking of bread, weaving of cloth are all these secondary activities. And then you have is tertiary, where through these services, transport, trade, banking, insurance, advertising are examples of tertiary activities. तो एग्रीकल्चर बेसिकली एक प्राइमरी एक्टिविटी है which includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, rearing of livestock. 50% of the person are engaged in agriculture activity, and 2/3 of India's population is still dependent on agriculture. Favorably, topography of soil, climate are vital for agriculture activity. The land on which these are crops are grown, basically उसको arable land कहते हैं. You can see it is considered in the regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. Like here you can see easily plains plateau area. यूरोप का काफ़ी इलाका जहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी होता है. इस तरफ नॉर्थ अमेरिका का, कुछ साउथ अमेरिका का, ये सारे इलाके जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है. ये भी पेपर में कई बार आता है. एग्रीकल्चर जहाँ पे कल्टीवेशन होगा और प्लस रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक इज बेसिकली फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर. सेरीकल्चर जहाँ पर आप सिल्क वॉर्म्स को रेयरिंग कर रहे हैं. पिसीकल्चर वेयर यू आर ब्रीडिंग ऑफ फिश. एंड देन विटीकल्चर इज बेसिकली कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. हॉर्टिकल्चर, fruits, vegetables and the flowers. So farm system can be looked to as a system. Inputs are seeds, fertilizers, machinery, right? And then processes, plowing, sowing and spraying. Then you have the output, crops. Physical input are sunshine, temperature, rainfall, soil, slope. But human inputs are storage, labor, machinery, chemicals. Involved are plowing, sowing, irrigation, weeding, harvesting. The outputs from the crops are crops, wool and all these things. So types of farming पे बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है और मैं हमेशा पहले ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग ही बताता हूँ और यहाँ पर आपको देख के समझ में आएगा. एक बताएगा सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा होता है कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग. सबसिस्टेंस का मतलब जो आप घर के मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. तो बिल्कुल फार्मर्स फैमिली और नॉर्मली हमारे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होगी. हाउस होल्ड घर के ही बंदे लेबर ही करेंगे टू प्रोड्यूस एंड स्मॉल आउटपुट. सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2: इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस. इंटेंसिव सबसिस्टेंस का मतलब फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर. इसको कहते हैं इंटेंसिव, जहाँ पर फार्मर कल्टीवेट करेगा छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर. क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट. क्लियर है. जहाँ पर अच्छा सूरज की किरणें हो, फर्टाइल सॉइल हो, तो वहाँ पर एक क्रॉप मोर देन वन टाइम लगाया जा सकता है. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses and oilseeds. Intensive subsistence is primarily prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions like India, Southeast Asia,
ईस्ट एशिया। यहाँ पर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बताया, ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसमें आप बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं यूज़ कर रहे और ना ही जेनेटिकली मॉडिफिकेशन को यूज़ कर रहे हैं क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में आप निकाल सकते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और या नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने सभी को पता ही है, फॉरेस्ट एरियाज में क्या था, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया गया, वहाँ पर क्लियर करके वहाँ पर खेती करनी शुरू की गई। 2-3 साल बाद जब इसकी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होगी, देन मूव टू द नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड, वहाँ पर खेती की जाए, देन मूव टू द नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड। सो दिस वे दिस इज बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन। Normally forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. Areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes, cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. So shifting cultivation basically known as slash and burn. इसके एग्जाम्पल है झूमिंग, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहा जाता है, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में, लडांग मलेशिया। इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका जी। अब अगर मैं बात करूं नोमैडिक हर्डिंग की, तो ये नॉर्मली एरिड एरियाज और सेमी एरिड ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर. Herdsmen move from one place to other with their animals for fodder and water along defined routes. This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. Sheep, camel, yak, and goats are commonly reared here. They provide milk, meat, wool, hides, and other products to the herders. तो ये है जी अपना nomadic herding जो नॉर्मली इंडिया में भी की जा रही है. They keep on shifting to one place to another. यहाँ तो कैमल्स को पाला हुआ, कई जगह पर शीप्स को, कई जगह पर आपने गोट्स को. नेक्स्ट आते हैं जी कमर्शियल फार्मिंग. आर ग्रोन एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट. द एरिया कल्टिवेटेड मोस्टली कैपिटल इज यूज्ड इन लार्ज. मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स, जिसको हम एक्सटेंसिव फार्मिंग भी कहेंगे. इंक्लूड्स मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऑल्सो. कमर्शियल फार्मिंग are grown for commercial purpose. Wheat and maize are commonly commercially grown grains. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, Europe and Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of the hectares. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. Land is used for growing food and fodder crops, rearing livestock. So that is mixed farming practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Australia, New Zealand and South Africa. Plantations are of commercial farming, जहाँ पर एक क्रॉप लगाया जाता है, जैसे टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू नट्स, रबर, बनाना. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. The development of transport network is thus essential for such farming. Like rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India, Sri Lanka are some examples. A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops and important beverages are tea and coffee. अब ज़रा इनकी कंडीशंस क्या क्या ये भी हमें समझना पड़ेगा. जैसे मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड इज राइस, स्टेपल डाइट फॉर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल. ये गर्मियों में लगता है, टेम्परेचर हाई चाहिए, बारिश और ह्यूमिडिटी भी खूब चाहिए. बेस्ट लगता है एलुवियल या क्लेई सॉइल में विच कैन रिटेन वाटर. चाइना दुनिया में लीड करता है, इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट. फेवरेबल कंडीशंस है हमारे इंडिया में, साउथ में, सब जगह जहाँ पर भी पानी और ह्यूमिडिटी और गर्मी अवेलेबल हो. नेक्स्ट वीट की बात करूँ तो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठंडा टेम्परेचर, गर्मी नहीं ज़्यादा, और रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट. इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. वीट इज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन यूएसए, कैनेडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, एंड इट इज़ ग्रोन इन विंटर. इंडिया में विंटर्स में लगाई जाती है, बाकी कंट्रीज़ में तो गर्मियों में भी लगी क्योंकि वहाँ पर ठंड रहती है इन कंट्रीज़ में, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना.
मिलेट्स कोर्स ग्रेन्स हैं विच कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल. कम बारिश चाहिए और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए. एडिक्वेट रेनफॉल हो. ज्वार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया. देन मेज, जिसको हम कॉर्न भी कहते हैं, ये देख रहा मेज. कलरफुल वैराइटीज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड. इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, बारिश चाहिए, लॉट ऑफ सनशाइन. इट नीड्स well drained fertile soils. Maize is grown in North America, Brazil, China and all. Then if I talk about the cotton, it requires high temperature, light rainfall, 210 frost free days. ये भी पेपर में आया कितने frost free days वाला क्वेश्चन. For its growth, it grows best on black and alluvial soil. China, USA, India, Pakistan, Brazil, Egypt are leading producers of the cotton. One of the main raw material for the cotton textile industry. जूट, जिसको गोल्डन फाइबर कहते हैं, ये एलुवियल सॉइल, गर्मी चाहिए खूब और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, हैवी रेनफॉल. ट्रॉपिकल एरियाज में नॉर्मली इंडिया और बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जूट के. कॉफ़ी को गर्म और वेट क्लाइमेट चाहिए जी. वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए. हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप. ब्राज़ील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया. Then this one, it requires cool climate and well distributed high rainfall throughout the year and the growth of this tender leaves. Well drained loamy soils and gentle slopes. Labor in large numbers required to pick the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world. So agriculture development hota hai, the efforts to increase the farm production in order to meet the growing demand of increasing population. This can be achieved in many ways, such as increasing the cropped area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers, high yielding variety of seeds. Mechanization of agriculture is another aspect of agriculture development. The ultimate aim of agriculture development is to increase food security. At different places in different parts of the world, developing countries with large population usually practice intensive agriculture, where crops are grown on small holdings, mostly for subsistence. Right? Large holdings are more suitable for commercial agriculture. With the help of these two, one can learn from India and the other from USA. When all the people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs. A farm in India, Munna Lal, who is from Adilabad, has a farmland of 1.5 hectare. His house is in village. He purchases high yielding variety seeds from the market every alternate year. The land is fertile. He grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice. The farmer takes advice from his friends and elders as well as the government agriculture officers regarding farming practices. He takes tractor on rent for plowing his field, and some of his friends still use traditional method like bullocks. There is a tube well in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field. He has 2 buffaloes and 2 hens. He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. He is a member of the cooperative society which advises him on the type of fodder for his animals. So all the members of the family help him in various farm activities. Some take credit from bank, sometimes he take a credit agriculture cooperative society to buy HYV seeds and this thing. Then he sells his produce in the mandi located in the nearby town. Since majority of the farmers do not have storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. The government has taken some steps to develop the storage facility. यूएसए में बिल्कुल हालात बिल्कुल डिफरेंट. 250 हेक्टेयर की तो एक बंदे के पास वहाँ पर लैंड है और फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म. Grown are corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet. So Joe is a farmer in Midwest USA in Iowa. 300 hectares of land he is having. He grows corn in his field after making sure that the soil and water sources meet the need of this crop. Adequate measures are taken to control seed pests that can damage the crop. From time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. To plan a scientific fertilizer program, his computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field.
This help him to use the chemical fertilizers and pesticides wherever they are required. He uses tractors, seed drills, leveler, combined harvester, thresher to perform various agriculture operations. Grains are stored in the automated grain storage, dispatched to market agencies. The farmer in USA works like a businessman, not a peasant farmer. So this USA farmer is basically doing is extensive farming. And in India, it is intensive farming. And that is primarily subsistence farming. आई होप ये सभी को इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एक्सटेंसिव फार्मिंग भी समझ आ गई, क्रॉप्स की क्या क्या कंडीशंस चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसी बारिश चाहिए, ये भी समझ आ गया. और उसके बाद हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट क्या समझा, प्लांटेशंस, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सारा समझा. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जामिनेशन. So just focus on this chapter. I hope you people enjoyed this session. Thank you. Wish you all the best. And do subscribe the channel and do press the bell icon. Thank you.